before my father passed away in 2021, um, he removed some trustees जो fraud भी कर रहे थे, financial irregularities. So in his lifetime, he removed them, and at that time, and he did this legally, issued them ठीक letters, and then at the same time, he यानी also करप्शन की वजह से उनको निकाल दिया जी गया उनको था निकाल दिया एक्चुअली ये और दूसरे क्योंकि ये इन अ ट्रस्ट यू नॉट अलाउड टू हैव मल्टीपल फैमिली मेंबर्स ठीक है और इसने ये जो शौकत विर्क he put his wife as a trust member, he put his brother as a trust member, brother-in-law I think is a trust member, a lot of family members which is सही not allowed. सही So ये जब when my father found out, so and there were also financial issues going on, so my father removed them ठीक है trust से और अच्छा उनकी जो राइटिंग की रिमूवल है उसकी जी कोई जी एविडेंस वगैरह डॉक्यूमेंटेड लेटर्स है अच्छा हमारे ठीक पास ठीक है सबके लिए और वो लेटर्स जो उन्होंने उस वक्त लिखा दिया उसके उस पे उसका सिग्नेचर भी है और फिंगरप्रिंट्स भी है और वो वेरीफाई हुई है लाहौर पुलिस से अच्छा हम्म, अच्छा और उसने ये भी उस वक्त कहा कि उसके डिमाइस के बाद कि मैं होंगी चेयरमैन लाइफ टाइम चेयरमैन तो एट द सेम टाइम he removed these people from the trust, he appointed other trustees in their place and appointed me as chairperson. यानी आपको उन्होंने लाइफ लॉन्ग जो है चेयरपर्सन बना जी दिया जब उन लोगों को फारग किया गया था जी और एग्जैक्टली ट्रस्टी जो है उसके अंदर मेंबर्स जो थे वो जी नए दो पुराने मेंबर्स अभी भी है अच्छा हमारे ट्रस्ट पे और सही है फिर उन्हें ही एडेड न्यू मेंबर्स as well. सही So this happened during my while my father was still alive, but he was in the hospital. So and at that time when they were removed, they never said वो anything. कौन सी ईयर था 2021 में सितंबर अगस्त एंड ऑफ अगस्त या सितंबर में उन्होंने रिमूव कर ली यानी उनकी और माय फादर पास्ड अवे इन अक्टूबर सही है जी मतलब 2 महीने कबल जी जो है एग्जैक्टली तो सही है they were removed और then he filed for the at the same time he also notified all the banks क्योंकि हमारे पास उस वक्त 17-18 अकाउंट्स भी थे मुख्तलिफ बैंकों में अच्छा डोनेशंस के लिए सही तो he notified all the banks कि please freeze the accounts because we're changing signatories ठीक है नया ट्रस्टीज के साथ तो अभी उसकी रनिंग जरा बंद कर दीजिएगा ठीक है अकाउंट्स के ठीक है सही है तो what happened was most of the banks complied, some of them did not. So my father passed away in October. Immediately after my father passed away, this Shaukat Babar Virk, who was the trustee and general secretary who was removed, he filed a fake trust deed in which he named himself as trustee. He named Kaisar Amin Butt as the chairman. on behalf of And they said, oh, on gee, behalf of whom doctor साहब their argument was that, gee, Dr. Saab was out of his senses. And so we voted to remove him and we made ourselves trustees. But they had no power. They were not even in the trust. There's no legal backing to which they could even do this. Anyway, they filed this trust. It was registered with the sub-registrar of Gulberg. Now, this is the interesting point that I want to really mention. That same sub-registrar has recently filed an FIR against Shaukat Virk and these people for fraud, for giving him the wrong information, and he himself has said that this is not correct. This trust deed is not valid. यानी जिसके पास जाके उन्होंने अपने आप को रजिस्टर करवाया जी एज अ लीगल ट्रस्टीज और उसी ने उनके ऊपर भी केस कर एग्जैक्टली दिया उसने फ्रॉड का उनके केस ऊपर एक कर दिया FIR करवा ली और so using this fake trust deed, they approached several banks and they have managed to take out money from these bank accounts.